Thank you, Anil sir, for this kind words. I would like to thank our President sir for giving me this opportunity to introduce for the speaker of the day, Mr. Samir Gajjar. He is an eminent speaker. I would like to start with a quote. Oratory is the power to talk people out of their sober and natural opinion. The quote is given by Joseph Chatfield. What he says: today, we have with us, all of us, we have heard Samir Gajjar with us for the session as a resource person. He is one of the youngest entrepreneurs who has started his own business with the name of Clik. He is having experience of more than 10 years in the field of human resource and has trained more than 650 employees and students with his business. He is also a corporate trainer in various multinational companies. He has given training on various labor laws, various acts, soft skills, and so on. He has also developed various interactive training activities for students as well as for corporate organizations. He has also taken various guest lectures and conducted conferences. He has organized plenty of seminars, webinars, workshops at national level. Before we end, before I give the timing to Samir sir, I would like all the participants on the Zoom as well as on the YouTube link, I request all of you to please post your questions on the chat box. If you have any questions, we will be having question answer session at the last. So I request all of you to post your questions on your chat box. I would like to hand over the time to our eminent speaker, Mr. Samir Gajjar. The time is yours, sir. Current and future, that HR changes and challenges. What was the past into HR? What we are as of now, and what is going to be in future, right? पहले हम क्या थे HR में, कौन से रोल्स हमारे पास थे, हम क्या कर रहे थे, अभी in current situation where we are and where we are going to, कौन से changes आ रहे हैं धीरे धीरे. So we'll take one by one. First, what modern HR looks like. An HR professional wears many hats in the modern business world, and certain expectation that HR needs to meet, like HR as an employee advocate, that is most important, supporting the employee experience and making sure that employee work in the safe and productive environment. As we all know, right now the market, it is on candidate side, right? Because as company, as HR, I need to go in market and I have to get the candidate for my company. Before some time, the day was like कि candidate सामने से आ रहे थे, and right now हम means HR को हमको सामने से जाना पड़ रहा है. That is the main difference. So we can say it is the candidate based market, and modern HR will look like employee advocate and supporting employee experience. That is the most important. We can see like many activities companies are already doing, that is lunch at the noon and Saturday, that employee that engagement activities, and many more, right? So that are the examples as of now. And at the same time, HR must be frequently be thinking of business interests and how this ties into corporate objectives. As we all know, the position, that is HR business partner, right? पहले क्या था, HR assistant and HR manage training, not HR manager was also there, is also there, HR executive and all. Right now, positions are also changing. HR business partner, HR sales, and many more. We'll look into other slides, so you will have a better idea. So पूरे business के बारे में HR कैसे उसको handle करेगा, and how HR will support. That is the current. Okay, this is the introduction part. And next, the big shift, that is the digital age. As sir already told many things about that.
all of this expression have been used to describe the social and economic transformation, right? डिजिटल एज ऑलरेडी हम लोग फेस कर रहे हैं इस सिचुएशन में. पहले ऐसा था कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं था काफी जगह पे, एंड राइट नाउ एवरी कंपनी, सिचुएशन ही ऐसा है तो करना ही पड़ेगा डेफिनेटली. वैसे बोल रहे अभी घर से काम करो, एंड इन नियर फ्यूचर 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर मैक्सिमम हमारे जो सैलरी स्ट्रक्चर विल बी चेंज. जो अलाउंसेस हमको मिलते थे कन्वेंस अलाउंस, वो बंद करके इंटरनेट अलाउंस या ऐसे ऐसे कोई अलाउंसेस दिए जाएंगे जो घर से बैठ के काम करने के लिए मिलेंगे, टू मोटिवेट दी एम्प्लॉइज. व्हाई? बिकॉज कंपनी को प्रीमाइसेस नहीं लेना पड़े, मैनी मोर. So that is the change. Right? So we are experiencing in 21st century that is driven in large part by technological revolution. It means that is based on internet, big data, social media, artificial intelligence, and that has transformed the world we live in. पहले क्या करते थे हम लोग? When before 10-15 years we were doing the that recruitment. If I sorry, if I need to do recruitment, then I will call candidate, I will take the resume and so on. I will give a paper ad and employee sorry, candidate will come and all. Right now I will post a vacancy on internet and people will apply. That is the difference, right? Artificial intelligence, that is the future of HR. How it will support artificial intelligence, that is the into next slide. So we'll go it. And however, how is the world of business and work adapting to this new reality, and what role should human resource department play? What is the new reality? That is new normal, as we all know. So how this business will adapt and how HR will support to them. That is the main concern as of now, right? So we'll go one by one. Future trends of HR. First of all, that is know how the organization get ahead. How HR will support to the company and employee. We need to think for both sides, right? What it takes to create a winning company from culture to policies. We'll give you the example of Geo. And if you take the example of Google or Oyo companies, Google has already told to employees that they can work from home till next year, June, or whatever time. So, winning policies to create. अगर मार्केट से कुछ डिफरेंट करोगे देन एम्प्लॉय जो है मोटिवेट भी रहेंगे एंड लोग सामने से आपके पास आएंगे. दैट इज द फ्यूचर ट्रेंड. और काफी कंपनीज में आपने देखा होगा जो पुरानी पॉलिसीज, मैं रिमोट लोकेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर दी बिग सिटीज और मेगा सिटीज और मेट्रो सिटी वॉट, कुछ जगह पे अभी भी people are here from many cities and remote location as well, right? So in your location still HRs are doing the that paperwork as well, but right now HR is far away from that particular thing. So we need to create the policies to motivate the employee that are the into current company in your company and to attract the future candidates. Second point, that realize that your job may become one that includes several areas that promote the positive employee experience. That is the most important, positive employee experience. In the first slide I already told employee advocate, right? जो एम्प्लॉई है हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं पॉजिटिवली, उनको एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस हो कि वो यहाँ पे ही रहे, वो जॉब छोड़ के नहीं जाए, राइट? बिकॉज रिप्लेस करना इट इज सो इजी, बट वैसा कैंडिडेट मिलना इट इज टू डिफिकल्ट. इफ यू एक्सपीरियंस देन यू कैन हैव बेटर आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Second point, that keep learning and staying knowledgeable. As we read the news that HR is expected to stay well informed of new compliance and law updates as they pertain to human capital management. कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूँ और मेरे ही एम्प्लॉय के बोल रहे हैं सर ये चेंजेस है आपको पता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट?
So as an HR, I need to stay updated about the news and labor. So every day I need to that check the applications and whatever to stay well informed, because I need to manage the human capital. That is the also one change, that first of all हम क्या बोलते थे human resource, and right now the term has changed human capital, right? It is also one change. Next one, that is mm, recruit for skills. More companies are piloting skills based hiring or the practice of setting specific skills and competency requirement for the job rather than only looking at the candidate credential. Research conducted by Valley Education Services and Future Workplace with 600 plus HR leaders found that the majority of companies are open to hiring non-traditional workers. That is also one change, right? Not for every positions, so don't worry. For some positions, uh, companies are looking for the skills as of now. Say for example, अगर मैंने BA किया हुआ है, right? But I have the skill of accountancy. मैंने कहीं पे ऐसे कोचिंग किया है, मैंने कहीं पे ऐसे लेक्चर्स अटेंड किए, एंड मेरे पास टैली का नॉलेज है. मैं जाके कंपनी में बोलूंगा कि सर मुझे जॉब चाहिए, तो मेरे पास ऐसा नॉलेज है, दे मे हायर मी, right? Because companies are looking for skills as of now. But yes, education is also important for many positions. It is not like कि MBA किया है तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं. For some positions, as basic level positions, they may, because skills are also important. So try to update and upgrade both your skills, whether it is a hard skills, means technical skills, or it is a soft skill. Both are important, because if I will go with any positions, it will require the technical skills as well as soft skills, right? So company will look for this also. Next one, that is again important point, that is virtual and augmented reality, VR and AR, that both are same. It is new term, and शॉर्ट टर्म में वो धीरे धीरे अप्लाई काफी आउट ऑफ कंट्रीज, मैनी कंट्रीज में ऑलरेडी ये चल रहा है, इंडिया में अभी नहीं आया है. सो while it's easy to assume that human resources is a world apart from the traditional virtual reality domain, the truth is that VR is one of the latest trends in HR technology. Virtual reality, sorry. आपने देखा होगा अभी एक नाम अभी याद नहीं आएगा, किसी कॉलेज में जो एनुअल फंक्शन हुआ था ना, that was into virtual. That is the latest one, new world. That is the change. Both VR and its cousin augmented reality are gaining power as practical tools in the HR practices toolbox. They support front-end processes like recruiting and onboarding with numerous applications, like setting up a simulated environment that tests candidates' job-specific skills, sharing a virtual tour of your office space, or using VR to boost recruiting efforts. रिक्रूटमेंट के लिए तो बेटर है ये VR, और ये यू कैन से AR. व्हाई? कैंडिडेट को यहाँ पे आना ही नहीं है, घर पे बैठ के ही पूरा इंटरव्यू हो जाएगा, और वहां बैठ के ऑफिस वो देख लेंगे. बिकॉज इन मैनी पोजिशंस, इन मैनी दैट डिपार्टमेंट, कंपनी सबसे पहले ये उसके प्लांट का या प्रोफाइल जो है उसके हिसाब से टूर करवाती है कंपनी का. तो उनको पहले से वो पता चलेगा कंपनी में कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे बैठना है. So it is more easy for company, means us, and for the candidate as well. One more example for this VR, that is कहीं पे हम लोग जा रहे हैं to buy the furniture, right? But वो उसमें भी अभी VR is also there. आपको वो लोग सेट करके बताएंगे आपके बेडरूम में, आपके किचन में, के जो भी डाइनिंग टेबल या व्हाटएवर, वो लोग सेट करके आपको बताएंगे पूरा वर्चुअली कि यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, वहां पे रखेंगे तो वैसा दिखेगा. इट इज बेटर टू मेक हियर एंड व्हाटएवर. दैट इज द वर्चुअल रियलिटी. सो वी नीड टू बी रेडी फॉर दिस.
Some of the examples are here. The British Army is using VR for recruiting. Convincing people to join the military is a hard sell. In order to boost army reserve recruitments, the organization put together 4 VR experiences, each based on common training such as war and tank training. During the first month that the experiences were posted on YouTube 360, that was the channel, the army saw 65% of increase in the applications. See the difference. आर्मी में कोई ज्वाइन करने को रेडी नहीं था, बट दे हैव दैट यूट्यूब चैनल पे उन्होंने एक पोस्ट रखा कि ऐसे ट्रेनिंग मिलेगा, दिस इज द लाइव ट्रेनिंग, एंड देन आफ्टर दे हैव द एप्लीकेशंस एंड 65% ज्यादा एप्लीकेशंस वो लोग के पास. दैट इज द मेन डिफरेंस. Second, virtual and augmented reality also extend to training scenarios, either as a part of the onboarding process or to provide current employees with the additional training. For both, for the new employee as well our current employee, it will be more important how they will work in our current company, how this onboarding process, company में joining के बाद हम लोग करवाते हैं ना induction process and onboarding, they both are simultaneously. So उसके लिए ये यूज होगा. Benefits of virtual environments for corporate training includes a much higher cost efficiency and better safety for high-risk industries like construction. Partial or fully virtual environments can combine real-world tasks with virtual instruction. This allows employees to view learning prompts as they engage in hands-on activities. Right? Agar, say for example, if I need to train my particular employees, then what should I need? I need particular conference hall, I need chairs and setup, right? But if I will do with this virtual reality, then there is not much requirement of anything of that hall or chair or notepad or whatever, that whiteboard or whatever. So if I will use this particular for training, it will be beneficial for both of us. And though VR and AR haven't seen widespread adoption yet, the significant implication for recruiting and on-the-job learning make them one of the top HR technology trends to pay attention to over the next few years. As I already told, in next some years, this will be the future. Yes, there are many problems will be also there. हर एक टेक्नोलॉजी लेके आओ, हर एक में प्रॉब्लम होते ही है ना. अभी आप लोगों ने फेस किया लाइव रिक्रूटमेंट में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, विल डिस्कस अगेन नेक्स्ट स्लाइड. वेट, नेक्स्ट में ओके, नेक्स्ट वन दैट इज एआई, artificial intelligence into recruitment. Why I have put the word recruitment? Because first of all I need to do recruitment, na? Then other HR functions will be there. In the year 2020, AI-driven solution will provide immense innovation in industries including banking, finance, manufacturing, retail, healthcare, transportation, social media, and many more. Organization will adopt AI and use it in recruitment and hiring processes. AI-powered solution will rule in the year ahead with the following advantages. That is, first, time saving. Time saving how? Chatbots, considered as the dream assistant, are the conversation. Just a minute. Interface platforms that save time and speed up the recruitment process by answering the most common questions of the application. AI will minimize repetitive tasks, hence enabling organizations to make hiring decisions faster and improve candidate experience. As we already know about the chatbots, right? Those who don't know, we'll give you the example. Say for example, आपको कुछ issue है Paytm में, right? या फिर कहीं पे आफ्टर बैंकिंग कवर्स या गूगल पे या whatever एप्लीकेशन, तो वहाँ पे कॉल सेंटर नंबर तो नहीं है ना, और है तो 10 to 7 का टाइम. इफ यू नीड हेल्प, वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, गूगल में भी ऑप्शन ही है, राइट? सो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं वो, व्हाट इज द क्वेरी, then I will select the question and there will be 4 to 5 options, what is the exact query, and then by this way they will try to solve my query. So that is the AI.
Same thing will help into recruitment as well. If I will do recruitment, there are many questions of candidates. So if I will apply this AI into recruitment, it will help me to save my time. Many people are telling like if AI will come, then HR will be not more by 2022, 2025, 2030. Many have told that HR नहीं रहेंगे, HR कम हो जाएंगे. No, position will be changed. We need to update ourselves. Right? 10 में से 7 वैकेंसी तो रहेगी, हाँ 2-3 कम हो जाएगी because of this AI. Second point, that is faster candidate screening. It is also most important. Screening a large pool of applicants requires time and effort. For a single hire, candidate shortlisting and screening take up almost 23 hours of a recruiter's time. Just example. AI-powered recruitment solution will help in filtering high volume of resumes and pre-qualifying candidates based on the job description and skills. Such solutions will be more in demand in the coming year as recruiters would be able to identify candidates' personality, traits, and predict their suitability for their job role. This would not only reduce the hiring efforts but also encourage unbiased candidate assessment. Right? Unbiased. काफी जगह पे आपने देखा होगा बायसनेस अभी भी चल रहा है. मेरा फ्रेंड आ रहा है, मेरा कलीग आ रहा है, अंकल का लड़का आ रहा है, सो इट इज गॉन. इफ आई विल अप्लाई दिस, स्किल बेस्ड हायरिंग होगी. एंड फास्टर स्क्रीनिंग रिक्रूटमेंट के लिए, इफ आई एम इनटू एचआर देन आई नीड टू डू रिक्रूटमेंट, राइट? सो रिक्रूटमेंट के लिए एआई विल हेल्प मी मोस्ट. बहुत सारे रिज्यूमे आके पड़े, उसमें से which one is better for me, so this will help me. And quality hiring, third point, that is with unbiased screening and selection of candidates through AI, the quality of hire will improve and organization would see a more productive and talented workforce in coming year. Right? Agar if AI is there, then I will have the quality hire, so company को भी more productivity मिलेगी and company will have the talented workforce. सिंपल एग्जांपल से और समझो एआई को. आप सब गए होंगे कहीं पे भी टोल टैक्स बीच में आता है ना रास्ते पे, वेदर इट इज स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे. मोस्टली कुछ स्टेट में निकाल दिया है, नेशनल हाईवे पे तो अभी भी टोल टैक्स है. वहाँ पे जाने के लिए आने के लिए 6 लाइन्स ऑलरेडी होते हैं. अभी तो फास्टैग भी आ गए हैं. सो दूर से आपको वहाँ पे लाइट्स लगी, वहाँ पे लगाई होती है, लाइट लगी होती है. कुछ लाइट ग्रीन होती है, कुछ रेड होती है. व्हाट डज इट मीन? सिंपली एआई हो गया ना, वहां से आप उसका एग्जांपल मिलेंगे. रेड मतलब वहां पे मुझे नहीं जाना है, मेरा काम इजी हो गया. It is the most simple example of AI. So by this way, AI will help us. So this is the future of HR, right? That, as Sir told, that analytics, HR departments have been collecting data for decades, but most haven't been putting that data on proper use. Hopefully, this is all set to change. However, until HR professionals start truly using the data and closing the gap between theory and practice, HR analytics is going to keep moving on the list. अगर यूज नहीं करेंगे तो नहीं होगा. What is analytics? Say for example, absenteeism rate or cost per hire or attrition rate or return on investment. There are many metrics in HR, right? अगर मैंने पिछले 1 साल का डेटा निकाला है कंपनी से, and I have the rate that particular for this 3 to 4 months, I have many that absenteeism is more for particular this month. So what I can do? First, I can reduce that absenteeism by what way? I can ask to candidates with my employees by taking the feedback, by employee feedback, like by that exit interviews as well, right? But do you think it will be 100% sure that employee will tell कि हाँ सर यही प्रॉब्लम था, मैडम यही प्रॉब्लम था? No, 50-60% ही सही बोलेंगे ना. जिसको जानना होगा तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे. But yes, by this way I can reduce the absenteeism rate. So analytics is also the near future of HR.
बट उसके लिए आपके पास डेटा प्रॉपर होना चाहिए. आई नीड टू काउंट इट. ओके, नेक्स्ट वन. अगेन, striking a balance between machines and workers. New technologies poses a new challenge for all employees and also for human resource leaders. What kind of jobs can be replaced by machines and what ones should be performed by the people only? The answer to this question calls for the redesign of jobs, the organization of companies, and indeed the future of the company itself. While many companies may be worried about the negative impact of the technological revolution, they should see it as a huge opportunity combining workers and machines. Right? As I already told कि machines आ जाएंगे, मतलब ये artificial intelligence and all will come, then it will not like कि हमारी openings जो positions है job से वो चले जाएंगे. कंबाइन करके भी साथ में चल सकते हैं ना. Which some people call augmented workforce may create a new jobs, boost productivity and allow workers to focus on the human aspect of work. देखो अभी one example for this, हम लोग तो आई एम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, राइट. जो लोग बड़े सिटीज से हैं उनको पता होगा कि अगर आपका ऑफिस एंड होम लोकेशन is a far more than 10 to 15 kilometers, more than, then I that need 1 hour to travel, right. मतलब ऑफिस जाना है तो मुझे सुबह 9 बजे निकलना पड़ेगा, शाम को भी कितना टाइम लगेगा आने के लिए. बट इनकेस कुछ डिफिकल्टी हो गई तो ज़्यादा टाइम लगेगा. इसी एग्जाम्पल को आप पुणे या हैदराबाद या बेंगलोर में जो काम करे उस एम्प्लॉय से मैच करिए. एज वी ऑल नो कि वहाँ पे इतना ट्रैफिक है दिल्ली जो एनसीआर नोएडा वगैरह के लिए. दे टेक मॉर्निंग में 8 बजे वो लोग निकल जाते हैं, 8 बजे 10 बजे तक ऑफिस पहुँचते. तो उनके दिन के 4 आवर्स वो बच गए ना, वर्किंग फ्रॉम होम आ गया तो. सो दिस इज द न्यू चेंज. नेगेटिव इम्पैक्ट भी है वर्क फ्रॉम होम के, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास, राइट. सो इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेंगे हम. Next one, that is from hiring and firing to enabling, empowering and creating experiences. It is, used to be that HR was just a place you went to get hired and fired, but those days are long gone. Right? I told that पहले HR में ऐसा था कि हायरिंग करो, पेपर बनाओ एंड बस रिजाइन करो. बाकी सब काम कंसल्टेंट करते थे, मैनेजर या अकाउंटेंट करते थे. बट नाउ इट इज नॉट. Today, HR is responsible for a wide range of employee activities, most of which around uh, enabling, engaging, and empowering employees. HRs are the major players in creating employee experience, which works with an organization culture and growth, and ensures that employees feel valued and supported along every step of their workplace. Employee will feel valued, right? अगर मैं आपके वहाँ पे काम कर रहा हूँ, भले आप मुझे 50,000 50,000 सैलरी दे रहे हो पर मंथ, लेकिन मेरा वैल्यू वहां पे नहीं है, तो किस काम का वो जॉब. अमाउंट है और उससे वो मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना. सो HR is doing the same thing from many time, but for advanced level we need to dig it more. एंड इसके एक और एग्जांपल समझो. एक मूवी आई थी, मूवी नेम वाज पूरी सर्जिकल स्ट्राइक. मोस्ट ऑफ पीपल्स ने देखा होगा वो मूवी. उसमें वी सीन दैट दी फ्रेशर गाय तो ट्रेनिंग में था ना, एक इंटर्न स्टूडेंट वाज देयर एंड ही वाज मेकिंग सम दैट वीडियो काइंड ऑफ बर्ड, राइट. और उसी की हेल्प से वो पूरा हुआ था, एज वी ऑल नो. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फ्रेशर है, मैं फ्रेशर हूँ तो मेरा वैल्यू वहां पे नहीं होगा. हम एचआर को, मतलब मैं एचआर में हूँ ना, तो मुझे फ्रेशर की भी इतनी ही वैल्यू करनी है. एम्प्लॉय फील वैल्यूड, राइट. तभी कंपनी का ग्रोथ होगा. अदरवाइज जो एज यू ऑल नो कि वहां पे प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे. फ्रेशर फ्रेशर का ग्रुप बनेगा, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस का ग्रुप बनेगा एंड इंटरनली झगड़े चालू हो जाएंगे. नेक्स्ट वन, दैट इज
from no seat at the table to key seat at the table. हमारे पास पहले कोई टेबल नहीं था, साथ में ही बैठते थे सब, पूरा कैबिन हमको मिलता है, पूरा एक जगह मिलता है बैठने के लिए. Today, HR is evolving into more central role in organization where it has a key seat at the decision-making table. I have the example. HR is more involved than over with the other departments and often it hands in many baskets to the company. Recruitment के लिए तो है, but other बहुत सारे ऐसे parts है HR के, AR. HR is also working for that. An example is there. In this Gujarat, in this Baucharaji, the plant of this Honda in 2014, they were started, right? The basic level of work. So first of all, they hired the top management and HR. They hired. Why HR? बाकी सबकी हायरिंग तो अभी नहीं करनी है उनको, तो HR को क्यों हायर किया? Because HR will be the central point. HR will look out for the all areas, like नजदीक में कितने एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, आसपास के एरिया का क्या सिचुएशन है, राइट? दूर से कितने एम्प्लॉय आ सकते हैं हमारे यहाँ पे प्लांट पे, क्योंकि प्लांट का लोकेशन बहुत दूर है यहाँ से, अहमदाबाद से तो काफी दूर है, बट आसपास के एरिया से भी ना, दे नीड टू चेक. सो ऑल वर्क विल बी डन बाय HR. So HR will be central point. Right? So this is the one change also. Next one, that is from filling gaps in the jobs to unlocking human potential. In many cases, HR is now focused on making sure employees get the professional development skills they need to better their careers. Instead of simply plugging employees into position into organization, HR works with the people to find their best skills, unlock and develop talents that might be below the surface, and shape a position in organization that meets their skills and interests. Right? ऐसा नहीं कि जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको खाली पोजीशन दे दो, वो ऐसे घोड़े के जैसे काम करे और शाम को चले जाए. नहीं, उनका पोटेंशियल, उनका जो भी स्किल्स है डेवलप करना है मुझे, और उसको आगे लेके आप जाएंगे कंपनी में, राइट? आपको फाइंड करना पड़ेगा उनकी कौन सी बेस्ट स्किल है, अनलॉक एंड डेवलप टैलेंट्स, एंड उसके हिसाब से कंपनी में उसको पोजीशन आपने दिया. जैसे सर का ही एग्जांपल था, आपके मतलब जो सर है ना ये कॉलेज के, उनका ही एग्जांपल था. उन्होंने स्टार्ट किया था कुछ पोजीशन से एंड सर इज द हेड नाउ. सो अगर वहां पे कंपनी में उनको मिला पोजीशंस, दो अनलॉक ह्यूमन पोटेंशियल. पहले एचआर ऐसा नहीं करते थे, बट राइट नाउ वी आर डूइंग. नेक्स्ट वन, yes, from human resource job titles to people talent and experiences title. In the first slide I told, many companies have moved from traditional titles, HR trainee, time officer and many more. वो चले गए अभी. CHRO, that is chief human resource officer, it is the latest position in HR. chief experience officer, CEO वो भी है, experience officer नाम देखो आप खाली, talent manager and many more. New titles show the expanded scope of HR and how it is involved in many more areas of employee experience. From first slide, it is I think 7 or 8 slides we have gone. Employee experience is the most word that I have used commonly. Why? Because it is employee based market right now. So positions अभी change हो रहे धीरे धीरे. मैंने आपको पहले ही बोला था ना that HR business partner, HR sales and many more. These are the many other titles of HR. And so on, right? So we need to update ourselves with the new skills to compete in this current and future market. It is the same that turn analysis into strategy. While analytics provides valuable insight to an organization, the next step is finding the way to apply HR practices in a strategic way to create change. If the data
says that organization has a poor retention and low employee engagement, you need to find a way to fix it. As I already told ना उस एनालिटिक्स स्लाइड में कि अगर आपके पास रिटेंशन लो है उसको बेटर कैसे बनाए. डेटा तो आपके पास है, आपने काउंट भी कर लिया, बट हाउ? Considering all that HR professional juggles, that's not always easy. But being involved in everything from the employee experience to payroll budget to learning and development gives you a unique perspective. And once there is a plan in place, it's up to HR professional to execute and adjust as necessary. डेटा आपके पास है, आपके पास पूरा एनालिसिस भी है, तो इसको स्ट्रेटेजी में कैसे बदले, अप्लाई कैसे करें, हाउ, दैट इज अप टू यू. One example is there. Here one company name it is Arvind Limited. HR from Arvind, she has taken the training from here, and in particular that Arvind Limited, na, they have 200 plus daily wages worker. So what happens कि particular duration में festivals में वो employee नहीं आते, है ना, जो लोकलाइट होंगे वो तो नहीं आएंगे ना, बोले मैडम फेस्टिवल है सर, फेस्टिवल है, हम नहीं आ पाएंगे. सो व्हाट यू विल डू, जैसे अभी गए 3-4 वो आते हैं ना जन्माष्टमी और वो मतलब जो भी फेस्टिवल 3-4 दिन एक साथ में थे, तो 4 दिन एम्प्लॉइज नहीं आएंगे, देन व्हाट विल यू डू? उसको एम्प्लॉइज को निकाल भी नहीं सकते और 4 दिन के लिए नए एम्प्लॉय भी नहीं मिलेंगे हमको. सो इट इज द एग्जांपल कि आपको ऑलरेडी पता है कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, सो पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर आई नीड टू बी रेडी. बट हाउ? टर्न्स एनालिसिस इनटू स्ट्रेटेजी. I need 200 employees for particular 3 days, then I will call manpower consultant. Many more options are there. So these are the changes. Next one is adapting to innovation. Technology is constantly changing. Business must be quick to adapt, all this being left in the dust by their competitors. The challenge for small business owners is getting employees to hold innovation and learn new technology. हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं ना इसका कि न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चेंजेस, इनोवेशन. So how you need to adopt solution? That is, communication is critical. With any change, make sure your team understands the why, when, and how. Right? And set clear goals for the adoption of initiatives and provide employees with the training they need to get comfortable with it. Changes धीरे धीरे हो रहे हैं. So we need to train our employees with the new technologies. So वो हमारी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगी, क्योंकि उसको किसी और कंपनी में देखेगा हमारी कंपनी में तो ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे, हमारे हमको तो नया कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा है. सो दे विल मूव. हाँ, थोड़े बहुत ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जो सैलरी के लिए वो काम करते हैं, वो वहीं पे रहेंगे, बट इफ दे आर ना कि उनको आगे बढ़ना है तो दे विल. एंड नेक्स्ट वन दैट इज वर्कप्लेस डाइवर्सिटी, मल्टीपल जनरेशन and traditional culture differences. Both points. Many generations are working here. Sir, जो है वो senior, I am into generation, and many freshers are also there. So multiple generations, traditional and cultural differences. Right? These are the just a few of the many factors that make workplace diversity a continual challenge for the small business and many more big companies as well. कुछ कंपनीज में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस कि वो लोग एक ही माइंडसेट से काम करते हैं, राइट. तो वहां पे कोई एम्प्लॉय जाएगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ऐसे ही काम होता है, मैं जॉब छोड़ दूंगा. तो अदर उनके वहां पे वैसे ही चलता रहेगा, और एल्स कंपनी को वहां पे लुकआउट करना है, देखना है कि वेयर इज द प्रॉब्लम, वो कौन करेगा, एचआर. व्हाट इज द सॉल्यूशन? Creating a culture of teamwork and respect will keep the work environment positive and productive.
Implementing a diversity training program is a must. I repeat, implementing a diversity training program. How to set? Employers are responsible for setting standard of behavior in the workplace. The third point, it is also most important. And standards and system of accountability should be set up early on. बताया ना कि ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है, सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, जहाँ पे ऐसे जनरेशन गैप, ट्रेडिशनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, देन वी एचआर नीड टू स्टैंड एंड वहाँ पे मुझे ये चेंजेस करने. सो दिस आर दी मेन चेंजेस जो काफी टाइम से चले आ रहे थे. अभी एचआर यहाँ पे और आगे जाके ये हो रहा है. वन मोर एग्जांपल, रिक्रूटमेंट का एग्जांपल. बिफोर 10-15 years बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि जॉब पोर्टल आ जाएंगे, एज वी ऑल नो ना, जॉब पोर्टल अबाउट दी नौकरी पोर्टल और टाइम्स जॉब पोर्टल और मेनी मोर. इफ जॉब पोर्टल्स विल बी देयर ना, आवर वर्क विल बी सो इजी, ऐसा लोग बोलते थे. एंड सी नाउ इट इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. रिक्रूटमेंट ना, रिक्रूटमेंट में जॉब पोर्टल से कैंडिडेट को ढूंढना और उसको लाइन अप करना, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. So same AI, that is virtual reality and all, will come, right? But we need to update ourselves. We need to upgrade ourselves. That is the main challenge and changes. This is the last example. I will share one more. Right? We told about the future, current and future that changes. And in current scenario, what we are facing? First one, that is communication part. Productive and frequent communication is what will separate aligned teams from the disconnected one. Just as our PM regularly updates us on the number of the cases of coronavirus, the progress of restriction, so should you with your employees and critical business information. Right? As we all know, कि daily हमको updates मिलते हैं. So same thing, क्योंकि employees तो अभी office पे नहीं आ रहे ना, so communication is most important in this current world, new normal. Some people is there, उनको आवाज आ रहा है. Please mute yourself if possible. Do this in team and individually, and never underestimate the team's desire for slow and regular communication. Right? We will never underestimate कि उसको regular update मिलेंगे, then and then they will work. उसको पता ही नहीं है communication का एक कुछ platform आपके पास होना चाहिए into this situation. काफी कंपनी के पास तो ऐसे एप्लीकेशंस भी नहीं थे अभी तक, भले ही पेरोल सॉफ्टवेयर उनके पास थे, बट ऐसे एप्लीकेशंस नहीं थे अभी. दे हैव मेड मेनी ग्रुप्स एंड मेनी मोर थिंग्स. दे हैव परचेज्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक टीम मीटिंग्स एंड मेनी मोर. This is the new challenge for us. Second one, that is employee training. Identify digital tools to impart training for employees, managers, mentors, and trainers, turning around the concept of working remotely. This program will help them manage stress, build positive outlook, and stay productive under the remote working model. कल से काम कर रहे हैं हम लोग, right? Many companies और many employees are still facing कि वहाँ पे ऑफिस पे नहीं जा रहे वो लोग. So how you will help HR? How HR will help to them? So you need to update by this training how people, our company employee will work with the stress, how they can manage the stress, because कल से काम कर रहे हैं ना. To build positive outlook, वो पॉजिटिवली कैसे काम कर पाएंगे, उसका जो आउटपुट है कैसे उसको मिलेगा, राइट? एंड टू स्टे प्रोडक्टिव अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस. एज वी ऑल नो कि वो डेटा तो अभी बहुत सारे डेटा आएंगे, बट मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स इन दिस सिचुएशन, राइट? सो कहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स भी ऑलरेडी हमारे पास है कि काफी लोग कहीं पे भी जॉब अभी कर रहे हैं, राइट? सिचुएशन ऐसा है. So you need to train your employees. Next, that is productivity. Difficult to predict how employees will react to the changes in way we live and how we work.
ensure you have healthy policies, again policy, and initiative in place around well-being, and make a particular effort to support employees from emotional and psychological perspective, so that they feel better equipped to cope and therefore are more able to contribute at their usual level, right? अभी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी आ गए, आज तक किसी ने देखा ही नहीं था वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, राइट? अभी आ गए. सो वी नीड टू मोल्ड अवर सेल्फ. सो बाय दिस वे उसका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा? सो लास्ट पॉइंट, सपोर्ट एंड कोच योर टीम विल एंश्योर हायर प्रोडक्टिविटी. सेम पॉइंट again, as an HR, I need to support, I need to train them to get the better productivity. And last one, that is developing economical mindset. Financial crisis has not just left millions of people but also large organizations helpless and financially insecure. एम्प्लॉई लोगों की, मतलब जो भी जॉब कर रहे थे उनका जॉब तो काफी लोगों का गया है, बट कंपनीज आर आल्सो फेसिंग दिस इश्यू. काफी कंपनीज बंद हो गई, राइट? जो बड़े बड़े कंपनीज थे जिनके बहुत सारे ब्रांचेस थे वो भी बंद हो गए because of this situation. It becomes the responsibility of leaders and individuals to adopt a zero expense mindset. We'll try. All investments must either contribute to the top line or the bottom line in the form of the productivity, efficiency, or cost optimization. A fine balance between where we spend and how it adds to experience for our customers or the employee will be required. Right? अभी situation सबको पता है where we are. So in near future, in 6 months, 1 year, we will have the same this environment, right? मतलब कि work from home and many more things are there. अगर उसका वैक्सीन आ गया है तो बेटर है, जब तक नहीं है तब तक हमको घर से ही काम करना है. सो कंपनी के पास भी, सी कंपनीज ने भी काफी एफर्ट लगाए हुए, राइट? मैं कंपनी से हूँ ऐसा जरूरी नहीं कि मैं कंपनी के बारे में बोलूँ. आई एम फ्रॉम बोथ साइड, आई एम कंसल्टेंट, सो एंड एडवाइजर ऑल्सो. सो एम्प्लॉइज को इतने ही प्रॉब्लम हो जितने कंपनी को हुए. कंपनी ने भी, काफी कंपनी जैसे बड़े बड़े कंपनीज ने 3-3 महीने पेमेंट भी किया है, राइट? काफी कंपनीज ने नहीं भी किया, राइट? कंपनी बहुत सारे ऐसे भी जो लोगों ने काफी लोग को निकाल भी दिया, ले ऑफ कर दिया. सो फ्रॉम बोथ साइड, कंपनी एंड एचआर needs to make this kind of policy, that is cost optimization. And if I am spending some amount, then वहां से कितना बेनिफिट मुझे, मतलब एम्प्लॉय को और कस्टमर को होगा, that will be required. Okay, so this is all about my presentation. I have the last example to give you all. Just a minute, give me 1 minute more, then we'll take your question answers if anybody have. In my all webinar from last 30 webinars, I am giving this example. So just a minute. This is the example for those जो अपना काम बेटर तरीके से कर रहे, लेकिन सी एग्जाम्पल देख लेते. चलिए फिर इंग्लिश में वहां पे लिखा है, आई विल एक्सप्लेन यू. पर्टिकुलर एक रात में, मतलब एक जगह पे, एक स्टोर पे, वन डॉग इज कमिंग एंड उसके हाथ में वन बैग इज देयर. इन बैग द सम अमाउंट ऑफ मनी एंड वन, एक टाइप का वो पर्ची, चिट्ठी होता है वहां, उसमें लिखा होता है ये सामान उसको चाहिए और दे दो. जस्ट एग्जाम्पल तरीके से ले. शॉपकीपर वो डॉग आया और उसके हाथ में ये सब है. आई थिंक डॉग इज वेरी वेल ट्रेन्ड. ओके, उसने सामान उसको दे दिया, बट शॉपकीपर को लगा कि इसके पीछे जाना चाहिए, कौन है इसका ओनर. ओके, सो डॉग वाज गोइंग टू दी बस, मतलब बस स्टैंड वहां पे वो जा रहा था, एंड शॉपकीपर वाज आल्सो फॉलोइंग. तो डॉग है वो जो जेब्रा क्रॉसिंग करके ही क्रॉस गया, वहां पर क्रॉस करके वहां पे सामने गया. शॉपकीपर वाज आल्सो फॉलोइंग. वो बस में चढ़ गया. टिकट जो दे रहे थे कंडक्टर, ही वाज आल्सो शॉप. ओहो डॉग, उसने वहां पे पर्ची थी, उसमें अगेन लिखा था कि गिव मी द टिकट, ऐसा, मतलब यहाँ तक का टिकट वहां पे लिखा था. उसने टिकट दे दिया.
घर पे पहुंच गया, राइट, घर पे पहुंच गया, डॉग घर पे गया एंड शॉपकीपर वाज फॉलोइंग। जैसे ही घर पे गया डॉग एंड वो बेल बजाने लगा, ओनर केम आउट एंड स्टार्टिंग टू बीट द डॉग, वो डॉग को मारने लगा। सो सडनली जो शॉपकीपर था ना वो फॉलो कर रहा था, उसने रोका उसको। व्हाई? दिस इज द पॉइंट कि आपका जो डॉग है इतना वेल ट्रेन्ड है, इतना अच्छा आपके लिए काम कर रहा है, उसको क्यों मार रहे हो? सो आंसर वाज, वो इतना कुछ कर रहा था तो मेरी नींद क्यों खराब की? अपने साथ में चाबी भी लेके जा सकता था ना। सो यू डू whenever, मतलब कि मैं हूं, आपको जितना भी अच्छा काम कर लो, नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव कमेंट्स विल बी ऑलवेज देयर, so try to avoid it and do your best. That is all from my side. Thank you so much for listening.